Hello everyone, I hope you all are doing good. So, let's start the vocabulary portion. This is useful for all defense examination and competitive examination. So, here we go. See, the first word is majestic. देखो मैजिक होता है ना, it is like majestic is an adjective which we call exalted. देखो, it is great, august and excited का है, ठीक है ये फॉर्म. ऑलराइट, सो मैजेस्टिक मीन्स कोई चीज़ क्या है, प्रभावशाली है. राइट, कोई चीज़ क्या है, किसका क्या है, इम्पैक्ट पड़ता है, जिसका कुछ इम्पैक्ट पड़ता है. ऑलराइट, उसे हम क्या बोलते हैं, मैजेस्टिक बोलते हैं. इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, पिटीफुल, जिसका कोई असर ही नहीं पड़ रहा है. ऑलराइट, विच इज़ नॉट ग्रेट. ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, पिटीफुल बोलते हैं. नाउ लेट्स सी द एग्जाम्पल. अ मैजेस्टिक ओक, one of the finest trees in the forest, stand near it. Means a majestic oak means a great oak. One, क्यों great है, क्योंकि ये क्या करता है, finest tree in the forest है which is near it. Alright, so next word is curtailment. curtailment मतलब होता है, देखो curtail मतलब क्या होता है, कोई चीज़ क्या करना, reduce करना. तो curtailment ये क्या है, एक noun है which means reduction, कट डाउन करना एंड कट बैक करना. सिंपली यू कुड रिलेट इट लाइक डिक्रीज करना. राइट, इट इज़ डिक्रीज करना. नाउ लेट्स सी दी ऑपोजिट. सो डिक्रीज का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, इंक्रीज, राइज करना. ऑलराइट, दीज आर द ऑपोजिट ऑफ curtailment. ठीक है, let's see the example. The curtailment of human rights in the is the worst thing to do. Means the shortening of the human right is the worst thing to do. We have some rights, right? So if we will not use it properly, so it would not be in a good manner. So the next word is inconclusive. Right, it is inconclusive, जिसका कोई क्या conclusion नहीं निकल सकता. So we can say which is not definite. So synonyms would be indefinite, indetermined and indecisive, जिसका कोई decision भी नहीं बन पाता, उसे क्या बोलते हैं, inconclusive बोलते हैं. Alright, so opposite would be conclusive, right, definite and which is determined. ठीक है, सिंपल है ना. लेट्स सी द एग्जांपल. दे kept on doing inconclusive negotiation for 3 years. Means they kept on doing indecisive negotiation for 3 years. Alright, so next word is resumption. Resumption is a noun which means to restart something, to start something, and we will call it restart. So synonyms would be restarting and reopening. फिर से कोई चीज़ स्टार्ट करना, ठीक है, रीबिगेन करना is the resumption. Alright, now let's see the opposite. It is suspension. किसी को क्या करना, सस्पेंड कर देना. ठीक है, अब उसे स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, उसका एंड करना. ऑलराइट, लेट्स सी द एग्जांपल. द रेन हैज़ स्टॉप्ड बट वी are still waiting for the resumption of the game. Means the rain has stopped but we are still waiting for the restart of the game. Alright, let's see the next word. It is dwindle. I think I told you this many times. Dwindle मतलब क्या होता है, कोई चीज़ का डिक्रीज करना, डिमिनिश करना, उसे क्या बोलते हैं, dwindled. It is a verb. Alright, so opposite would be increase karna. Right, now let's see the example. Traffic has dwindled to a trickle. Means traffic has decreased, diminished and reduced to a trickle. Alright, let's see the next word. It is unwitting. ठीक है, अनविटिंग मतलब क्या होता है, विटिंग मतलब क्या होता है ना, विथ इंटेंशन यू आर डूइंग समथिंग. ठीक है, यू नो व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंसेज इन फ्यूचर. बट अनविटिंग मतलब होता है विच इज़ नॉट इन, which is unintentional, right, unintended, unadverse, that you don't aware about it, you are not aware about its situation. Alright, so opposite would be deliberate. मतलब कहता है जानबूझ के कोई चीज़ करना, ठीक है, intensely कोई चीज़ करना. ठीक है, alright, now let's see the example. We are anxious to rectify the unwitting mistake made in the past. Means we are anxious to rectify the unintentional mistake made in the past. Alright, now moving to the next word. It is self. It is lay aside, कोई चीज़ क्या करे ना, टाल देना फ्यूचर के लिए. राइट, स्टे करना एंड पिजन होल भी बोलते हैं इसे. ठीक है, सो यू कुड से व्हाट वुड बी दी ऑपोजिट, कोई चीज़ क्या है, कैरी आउट करना, कैरी ऑन करना, उसमें क्या
would be the opposite of pigeonhole. Alright, let's see the example. Plans to reopen the school have been स्लीव्ड अप करना होता है ना, कोई चीज़ है फोल्ड कर देना फॉर, एंड इसको हम एक कह सकते हैं इट इज़ द पिजन होल, मीनिंग इज द पिजन होल. ऑलराइट, which means stay out and lay aside. Now let's see the example. Just we have seen the example. Now let's see the word. It is vigilant. Vigilant मतलब वो चीज़ क्या है, watchful है, ठीक है, aware है, ठीक है, observant है, and sharp eye means the person who can see everything. The person who is aware about the situation, who is alert in the situation, is known as vigilant. Alright, now let's see the example. Before example, let's see the opposite word. It is negligent, ठीक है, means the person is not aware, not alert, ठीक है. Example is the burglar was stopped by vigilant neighbor, means the burglar was stopped by a watchful neighbor. Alright, see the next word is exalt. Exalt मतलब क्या होता है, किसी चीज़ की प्रशंसा करना, ठीक है, प्रेज करना, एक्सटॉल करना, एंड ग्लोरीफाई, किसी कोई चीज़ है उसको ग्लोरीफाई करना. राइट, पेंट करना, ये कुछ से. सो अपोजिट वुड बी डिस्पास करना, ठीक है. डिस्पास मतलब क्या होता है, उसकी निंदा करना. ऑलराइट, now let's see the example. The party will continue to exalt their hero, means the party will continue to glorify their hero beside every other bad habits. Alright, so the next word is traumatic. Traumatic situation क्या होती है, disturbing situation. It is an adjective because it is showing the quality, ठीक है, which quality, disturbing quality, shocking quality, and distressing quality. So opposite would be soothing, ठीक है, calm and soothing. Now let's see the example. She was going through a traumatic divorce, means she was going through a disturbing divorce. Alright, so here we have completed the 10 new words of today. If you like this session, don't forget to like it, share it, and subscribe our channel. Thank you. Keep learning. Be safe, and Jai Hind.